हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट्स एट 360। हफ्ते का पहला दिन मंडे एंड लेट्स टॉक अबाउट द मार्केट्स। मार्केट्स वैसे देखा जाए तो बहुत ज्यादा कोई एक्टिविटी थी ऐसा नहीं है। पिछले 5 या 6 वीडियो से आई हैव बीन टेलिंग यू कंसिस्टेंटली दैट ये मार्केट्स में देर इज नो थीम विच इज कमिंग अप। पिछले 5-7 दिन से देर आर वेरी वेरी स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट्स जो मार्केट्स में हो रहे हैं। थीम वाइज जो हम लोगों को दिख पा रहा है दैट इज फार्मा एंड ऑटोमोटिव। सो मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स आर फ्रॉम द फार्मा एंड ऑटोमोटिव स्टॉक्स। आज मेटल इंडेक्स में भी खासा तेजी थी, बट मेटल इंडेक्स में पर्टिकुलरली as far as mid caps and small caps are concerned, we don't see a very big movements जहां पे हम लोगों को कोई एरे ऑफ स्टॉक्स मिल जाए। लेकिन यस, ऑटोमोटिव्स में आप प्रिसिजन इंजीनियरिंग ले लीजिए, फॉर्जिंग ले लीजिए, ऑटोमोटिव्स ले लीजिए, तीनों जगह पे बहुत जबरदस्त तेजी है। एज वेल एज फार्मा फार्मा में भी बहुत अच्छे स्टॉक्स में खासा खासा तेजी है। तो लेट अस टॉक अबाउट और लेट अस सी दिस थ्रू द चार्ट इटसेल्फ कि किस इंडस्ट्री में और किस इंडेक्स में एक्चुअली अच्छी तेजी बनती हुई नजर आ रही है। और हफ्ते का पहला दिन है तो दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर अस आल्सो, क्योंकि पूरे वीक में वी विल गेट टाइम टू प्रोबेबली टॉक अबाउट दीज चार्ट्स मोर और दीज स्टॉक्स मोर। सो पूरे हफ्ते का टाइम है हमारे पास, तो लेट अस टॉक मोर अबाउट इंडेक्स ऑल्सो एंड किन इंडेक्स में किस तरह की तेजी बनती हुई नजर आ रही है। तो आज एक और इंडेक्स है which gave which where we could see some sort of action after a series of downtrend, which is reality sector. So particularly if I say, तो Oberoi reality was which is one of the constituent of this sector of this index, वो काफी अच्छे से जिसमें बाइंग था, एंड बिकॉज ऑफ दैट प्राइमरीली द होल इंडेक्स was in uptrend. But we are trying sort of seeing a good trend with good volumes. तो यहाँ पे आपको आने वाले टाइम में, आने वाले हफ्ते में शायद अच्छा ट्रेंड, अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। और खासकर जो मुंबई रीजन के, एमएमआर रीजन के जो बिल्डर्स हैं, वहां पे आपको खासा ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है बिकॉज ऑफ दिस। सेकेंडली, एज वी टोल्ड अबाउट मेटल्स, सो मेटल इंडेक्स में भी काफी अच्छी तेजी थी आज। दिस इज अ डेज चार्ट। बट ये जो यहाँ पे जो हुआ है, इफ यू सी दिस, दिस वाज ऑन 15th ऑफ जून 2026, अ वेरी वेरी बैड कैंडल जिसको हम बोल सकते हैं। यहाँ पे जहाँ पे हैवी सेलर्स आर देयर, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करके लोगों में मतलब रिटेलर्स को ये स्टॉक प्लेस कर दिया गया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। दिस इज आवर अंडरस्टैंडिंग, राइट? सो अगेन, इज देयर एनी फंडामेंटल ट्रिगर्स ऑल्सो? Honestly, the answer is for particularly metal index, no, because Brent crude again that is going up। $88 का ऑलरेडी हो चुका है। दिस इज हफ्ते का पहला दिन है। एज वेल एज जो DXY, मैं आपको इतने टाइम से बोल रहा हूँ, डाउन ट्रेंड में है, लेकिन अभी भी ये 100 के बहुत नजदीक है, विच इज नॉट गुड फॉर द इंडियन मार्केट्स। सो आई थिंक बिकॉज ऑफ दीज टू रीजंस आपको देखने को मिलेगा कि दीज आर द two problems which the index is facing, and that is why we are not getting any direction, neither ऊपर का direction है नीचे का direction। uh, as far as small cap is concerned, again you can say there was a bit buying, but I won't say कि there is a मार्केट में बहुत बड़ी बाइंग है। मार्केट में एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी जो है वो काफी रेस्ट्रिक्टिव वे में चल रहे हैं, इनफैक्ट डिक्लाइनिंग मोड में है। सो anyone who is basically doing a swing trading or let's say kind of short term trading, he has to be very cautious, because हमारा जनरली एक्सपीरियंस ये रहा है कि if he is a bull
तो मार्केट्स अगर अप ट्रेंड में है देन ओनली ही विल बी एबल टू जनरेट गुड रिटर्न्स, and basically the probability or the chances of getting better returns will increase if it is a bull market, yeah, if the market is in uptrend. As far as this reality index is concerned, so what I like about it was कि ओबरॉय का रिजल्ट देखिए आप, मैक्रोटेक का रिजल्ट देखिए जो लोढ़ा डेवलपर्स, रेमंड का रिजल्ट देखिए आप, लोटस का रिजल्ट देखिए, एवरी कंपनी इज कमिंग आउट विथ वेरी गुड सेट, एंड उसी से मुझे ये कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि कहीं ना कहीं रियलिटी सेक्टर, रियलिटी इंडेक्स विल परफॉर्म गुड, एंड खासकर ये जो एमएमआर वाले जो मुंबई रीजन के जो बिल्डर्स है, दे विल बी परफॉर्मिंग रियली वेरी गुड. आई वाज एक्चुअली रीडिंग Raymond Reality's conference call, and I could see a very, very high confidence level of the management. So they are sticking to their guidance, and कुछ चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं फॉर एनी रियलिटी सेक्टर कंपनी. व्हाट आई फील इज, और मैं जिस जगह से हूँ वहां पे मैंने ज्यादातर बिल्डर्स को डेट स्पाइरल में फंसते हुए देखा है. नाउ दिस मैनेजमेंट इज वेरी वेरी कंजर्वेटिव in maintaining its debt to equity ratio, and that is actually reflective of how conservative the management is, and they don't want to fund their growth by getting more and more debt on the balance sheet, which is, क्योंकि क्या होता है रियलिटी सेक्टर में, देर इज अ जेस्टेशन पीरियड ऑफ 2-3 years, मे बी मोर देन दैट. बिकॉज ऑफ दैट 3 साल तक आप कुछ पैसे नहीं कमाओगे, लेकिन आपको डेट सर्विस करना पड़ता है जनरली, इसीलिए कंपनीज जो है वो डेट स्पायरल में फंस जाती है. आई थिंक कि एज फार एज मैनेजमेंट की जो कमेंट्री इज कंसर्न, मैं ऐसे मैनेजमेंट से बहुत खुश रहता हूँ जो अपनी सेक्टर को बहुत अच्छे से समझते हैं और उस सेक्टर के हिसाब से और उस ऑनेस्टी से वो काम करने की कोशिश करते हैं. सो दे डोंट वांट देयर इंटरनल टारगेट इज डेट टू इक्विटी रेशियो कैन बी हाईएस्ट अकॉर्डिंग टू देयर अंडरस्टैंडिंग इज 1, and today that is well below 1. It is around 0.37, which shows me कि कहीं ना कहीं ये जो मैनेजमेंट है, इट इज गोइंग टू डू a bit of good, you can say, efficient work, जहाँ पे एग्जीक्यूशन अब उनका दिखेगा, एंड एग्जीक्यूशन जहाँ दिखता है वहां नंबर्स में भी चीजें देखने को मिलती है. कुछ और अगर चार्ट देखे जो हमारे रडार पे थे, हमने एशियन एनर्जी के बारे में लास्ट वीडियो में भी देखा था. द रिजल्ट्स वर फैबुलस. रिजल्ट के बाद में ठीक है, कुछ प्रॉफिट बुकिंग आया होगा, बट ऑल दैट प्रॉफिट बुकिंग हैज बीन एब्सॉर्ब्ड इन अ डे, एंड द स्टॉक लुक्स लाइक टू बी इन अप ट्रेंड, एंड द रिजल्ट्स वर आल्सो वेरी गुड. सेकेंडली, इसका जो मर्जर रेशियो है, जो मर्जर का डेट है, वो भी नियरिंग है, मतलब दैट इज ऑलरेडी अप्रूव्ड ऑफ कोर्स, लेकिन जब जो अप्रूवल डेट होता है दैट इज ऑल्सो वेरी नियर, एंड इट इज गोइंग टू गेट रिफ्लेक्टेड वेरी सून इन द मार्केट कैप ऑफ द कंपनी ऑल्सो. दैट इज वाई ऑल्सो मुझे लग रहा है कि इसमें भी थोड़ा सा ट्रेंड मिलेगा, ट्रेंडिंग स्टॉक मिलेगा. हमारा येट अनदर ऑफ आवर पिक इज एफ एल, दैट इज फॉर्जिंग. जैसे हमने कहा कि फॉर्जिंग कंपनीज में काफी अच्छा ट्रैक्शन है, ऑटोमोटिव्स में काफी अच्छा ट्रैक्शन है. सो again, this company की conference call was very bullish, and we could find out कि yes, there is something happening in this particular stock. And as far as the balance sheet is concerned, अगर आप पिछले 10 साल की इसकी बैलेंस शीट अगर देखें, तो द कंपनी को कभी भी फंड्स की जरूरत नहीं पड़ी, मतलब इक्विटी रेज करने की जरूरत नहीं पड़ी. इफ यू सी फ्रॉम हियर, द कंपनी हैज बीन कंसिस्टेंटली गिविंग bonuses to its shareholders, rewarding its shareholders. लेकिन ये सब बोनस से ही बना है इक्विटी. बट इफ यू सी द ग्रोथ ईयर फ्रॉम 1,000 crore to 1,100 crores, the company did not need any equity capital, which is fantastic. There was no dilution. Of course, there is a high uptrend of debt. अब ऐसी कंपनी में क्या है कि डेट, अभी जो कॉन्फ्रेंस कॉल हुई उसमें भी समझ में आ रहा है कि
the management is saying that this year they have 150 crores of capex, but still the debt will remain up to this level only. That is not going to increase. And the company has been generating good cash flows over a period of time. So it's not a fearful um, state of mind that the company can go bust because of the debt or because of something else. लेकिन अभी जो अप ट्रेंड है related to forging company and related to automotive company, so this is basically from automotive and forging company, it looks like it will have a very good trend in years to come, and ऑपरेटिंग फाइनेंशियल लेवरेज भी इस कंपनी में देखने को मिल सकती है, जहां पे वी कैन क्रिएट सम एक्स्ट्रा अल्फा रिटर्न्स. So other than this, we have been tracking and we have discussed this also in our video. Man industry finally it is going again towards high against a lifetime high of 638.70 जैसा कुछ होगा. And if this is broken, so it looks like a definitely 744, 750 का target मिल सकता है. Company came out with really very good numbers. EBITDA पे भी ग्रोथ था, सेल्स नंबर पे भी ग्रोथ था. यूएस की जो उसकी सब्सिडरी है एनपीसी, वो भी it started contributing. So there are very much positive about these companies. And again, it looks like we have got a good stock to ride on. Uh, Even within the pipe industry, जब बाकी की कंपनियां are bleeding और बाकी की कंपनियां are in downtrend as far as the profit is concerned or as far as the sales number is concerned, now this company is giving you good returns, good numbers. So that is the company has done something good in the past, and you are getting the fruits today. Other than this, I think we had also discussed KRN. KRN has been in uptrend. It is a company which is basically owned by our small case also with reasonable allocation. And if you see this company, the management is absolutely bullish. Management has come out with yet another expansion, I think, in Bangalore, and which can again give a very big thrust to the profit of the company in the years to come. So I am again getting a bullish sense about this company, and we own it, so we are going to write it. And till when we are going to write it, we are not going to say or disclose anything about it because वो काफी सारे factors पे depend करता है. But yes, the stock is in uptrend. There is no doubt about it. Q Power again, the stock is in again a reasonable uptrend. We had discussed both of this stock. KRN भी discuss किया था as well as हमने Q Power भी discuss किया था. Uh, Again, we are bullish on this and we will remain bullish on this. जिस तरीके में नंबर दे रहे हैं. Other than that, this is again a very interesting bet what we have done. So Bhel is yet another company which is actually approaching again a 52-week high. The stock has been uptrend for last several years, and मैं कुछ कंपनीज कुछ अनलिस्टेड कंपनीज में गया था जिसका काफी बड़ा डिपेंडेंसी ऑन भेल है. एंड ऑल भेल इज सेइंग इज to these people who are their associate के आप अपना कैपेसिटी बढ़ाओ. हम वी आर फुल विथ ऑल, अगले 10 साल की हमारे पास में ऑर्डर बुक है. सो भेल का आने वाला नंबर भी बहुत जबरदस्त कंसिस्टेंटली दिख सकता है. कंसिस्टेंसी दिख सकती है हमें इस तरह के स्टॉक्स के नंबर में. एंड दिस इज वाई मेरा इंटरेस्ट था इस कंपनी को ट्रैक करने का. आई हैव बीन ट्रैकिंग दिस एंड आई हैव बीन investing in this company from lower levels. So other than this, I think yes, for the day we can we have discussed whatever we wanted to. I think इसके अलावा अगर कुछ इंटरेस्टिंग है, एक और कुछ इंटरेस्टिंग है which again give us a confidence. So again एक ये
So lastly, I want to discuss about this company. So this company came out, Vikram Solar. This is a company which came out with disastrous result. Um, but the stock is in uptrend because it is heard on the street that Adani is going to buy this company, and that is why the stock is in uptrend. Now there is neither the denial from the company or not the acceptance from the company. So this is purely a speculative move. But yes, this is there in the markets. And even after the disastrous result, the company has been able to maintain its price. Although it's an all-time low price, there is no doubt about it. But after such a bad result, also the company has been able to maintain its price in this range only. We are actually 14-15% company by a year because of this news. So yes, we had discussed whatever we wanted to. Uh, so yes, uh, this was a wrap up of today. Let's meet tomorrow again at the same time. Thank you.